हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमंत कुमार और मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा और लास्ट तक देखेंगे ताकि आप समझ पाएँ। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इफ़ P and Q, if P and Q are two propositions, then show that P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. Okay, this is the question. We have to show that P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. Okay, so to show it we have to first make its truth table, right? Why? Because we know that two statements are logically equivalent when they have same truth table. Okay, तो आइए ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसका। ट्रूथ टेबल, for this truth table we have to draw columns for this. First column for proposition P, okay, and second column for Q, थर्ड कॉलम फॉर निगेशन P। हमें जो जो चाहिए इसमें वो उसका ट्रूथ टेबल ले लेंगे। एंड नेक्स्ट कॉलम फॉर P implies Q एंड लास्ट कॉलम निगेशन ऑफ P और Q। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करेंगे। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल में ये शो किया जाता है कि वो स्टेटमेंट कब ट्रू है या कब फॉल्स है। अब देखिए, इफ़ वी हैव टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, टू प्रोपोजिशंस P एंड Q, देन दे may be both true, both P and Q may be true, or P true Q false, or P false Q true, or both propositions may be false. Okay, now we know that negation of a proposition is the just opposite sentence. Okay, then if a statement P is true या proposition P is true, then its negation P must be false. Here also false. Negation of false proposition is true. Negation of false proposition is true. Okay, now we have to make the truth table for P implication Q. P implies Q, इसका मतलब जानते हैं, if P then Q. ओके, तो if P is true and Q is true, then P implies Q must be true, right? Or if P is true and Q is false, then its implication P implication Q मस्ट बी ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट P जो है ट्रू है, फिर कंक्लूजन फॉल्स कैसे आ रहा है? तो ऐसा केस में P implies Q क्या होगा? फॉल्स होगा। और P अगर फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा ट्रू और ये भी हो जाएगा, ये फॉल्स। P एंड Q बोथ आर फॉल्स, therefore P implies Q must be true. Okay, because both P and Q are false. Now negation of P or Q, we know that a statement P or Q is true if either one of them is true. Okay, at least one of them is true. Here negation of P and Q are given in table, its truth table. So if negation of P is false and Q is true,
then their union means negation of P or Q is true, because we need at least one of them is true. Here is true Q, and negation of P is false. So negation of P or Q is true, and here it is false, because negation of P and Q both are false. Okay, and both negation of P and Q are true, therefore negation of P or Q must be true, and negation of P is true and Q is false, therefore negation of P or Q is true. Here we see that, look at here, uh, here both columns, column third, fourth, and column A fifth, means truth table of P implies Q, truth table of P implies Q is same like truth table of negation of P or Q. Here both have same truth table. Okay, hence P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q, because two statements are said to be logically equivalent if they have same truth table. Okay, thank you.